Let's take the example of a function which we are calling fx. The original function is fx. Now, fx can be any function. It can be a function that we know and it can be a function that we do not know. वैसा shape कोई ऐसी चीज हो सकती है that we entirely do not know. So, for example, in this one, we have considered this to be sine x. Okay, how do we get the graph of sine x? This is a graph of sine x. How did the computer plot this graph? It took different angles, see, different angles. यहाँ पे उसने angle put किया and whatever the value it got for those angles, sine 1, sine 2, sine 3, sine 4, sine 5, sine 6, and then so on, and then it plotted this entire graph. When I input 90, I got the output as 1. जब input 180 किया तो the output was 0 and the entire variation. So you need to keep the entire variation in your mind for this example. Is this clear? Okay. What if I would have formed a new function gx or मैं कहूँ that is 2 times fx, right? I'm not just making it. What have I done? I've multiplied the entire function. मैं इसी gx को ऐसे भी लिखता हूँ. पहले तो understand ये दोनों एक ही बात है और are they two something different? Same thing. What have I done? I've taken the entire function and I've multiplied the output by 2. Now what should happen here? इस बात को जरा समझो. Input तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ अभी भी. 1, 2, 3, 4. Input क्या है? X की values. Observe. What is the input at this point? 28. And what is the output? 0.469 for fx. This is the curve of fx. Now what should happen with g now? My every output will multiply by 2. जो 0 था that will remain 0. इसी तरह for example जो ये था for example 30 पे what was the output? 0.5. Now gx में 30 पे output क्या हो जाएगा? 1. इसी तरह 90 पे output was, now output at 90 will become 2. Is that right or wrong? So जो output है, all the outputs will multiply by 2. And इसी तरह जो negative है, for example, the output at 209 is negative 0.485. तो वो भी और double negative हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? So this is what the curve will look like. 2 times fx या 2 sin x का curve इस तरह से लगेगा. Make sense? Logic of the function should be incorporated in this. Trigonometric function is just being used as an example. इसी तरह if I would have done 3, is that right? So what do you observe? How has the function transformed? Original function इसमें sin का लिया है. How has that transformed? 3 चीजें बता देता हूँ. The 3 transformations that are in our syllabus: reflection, stretch, and translation. Reflection, stretch, and translation. Translation is just if you pick up something and you keep it somewhere else, that is called a translation. So what has happened out of those 3 transformations? Stretch. अच्छा, 2 तरह की transformations, एक vertical transformations और एक horizontal transformation. So which kind of a stretch is this? Vertical or horizontal? It is a vertical stretch. अपनी fingers देखो, if you have rubber band in your between your fingers and your thumb, and if you stretch it vertically, ऐसे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा. So what do you call this? What do you see? It is a vertical stretch by a factor of, अगर 3 कर दिया तो, it is a vertical stretch by a factor 3. One thing that you have to see that in this stretch, your x-axis is the invariant line. Your x-axis is the invariant line. That means if a point was on x-axis, that is the only point that will remain as it is. The x-axis is the invariant line. Vary नहीं होती, जो change नहीं होती. All the points on the x-axis remain as it is. उसके अलावा every other point will transform. Every other point will stretch. Is this clear or not? So think of it this way. इसी तरीके से अगर मैं आपको, for example, if I would have
बल्कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा। इज दिस क्लियर? एक और let's take the example of a quadratic function as well. Fx is px square minus px, yeah, minus. Okay. So now what would have happened if I would have taken another function g that was 2 times, yeah, 3 times fx. Now do you see? Again, what has happened? The curve has vertically stretched because, okay, think of a rubber band between your fingers and your thumb. You have one of your finger, your index finger and your thumb. And if you stretch that rubber band vertically, you're stretching it vertically, but I observe that it is squeezing horizontally. Does that happen or not? The same thing happens in quadratic as well. कि आपको नजर आता है कि you are stretching it vertically, but what do you see? यहाँ horizontal squeeze in हो रहा है या नहीं हो रहा है? But you do not call it horizontal squeezing. You see the operation. आप सिर्फ देखकर बात नहीं कर रहा, आप operation भी देख रहे हैं, because the output is being multiplied by 3, so every y value will become 3 times. Again, sir, x is the same रहेगा, तो x axis actually one same रहेगा, तो एक वर्ग पे तो y स्क्वायर ना कम हो जाएगा, नहीं क्यों कम हो जाएगा? Every vertical y, every point of y will be multiplied by 3. In this case 3 की बात कर रहा हूं, 3 की जगह 4 हो सकता है. It can also be half. You will still call it vertical stretch by a factor of half. Stretchy, yes, it's a squeeze. Lekin the transformation word that we use is stretch by a factor of half. Is this clear or not? वही तो कह रहा हूँ, squeeze हुआ है, it's compression, but you call it stretching by a factor of half. क्योंकि 3 ही transformation के words हैं that we'll be using: reflection, stretch, and translation. Is this clear? So the first thing that we have understood, लिखते जाओ साथ साथ, if a function is being multiplied by a, if original function fx था, अगर मैं उसको output को a से multiply कर दूं, so that will transform vertically, it will be stretched by a factor a. लिखते जाओ साथ साथ. This is the conclusion to the first transformation that we have studied. It is a vertical stretch by a factor a. Now a can be an integer, a can be a fraction as well, but उसको कहेंगे stretchy, सही है ना? So even if it appears to have squeezed in, we'll still call it a stretch. Is this clear? Make sense? Okay, moving on to the next one. Example sin x ही रख रहे हैं. Okay, what if I would have done f of x plus 3? What operation am I performing? I am adding 3 to the output, right? इसी function के हिसाब से सोचो what will happen. 0 पे when I was inputting 0 in sine, I was getting an output 0. But what will happen in gx now? Output 3 आ जाएगा. इसी तरह every output will be increased. सब में 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐड हो जाएगा. जो 1 आना चाहिए था ये कहाँ चला जाएगा? 4 हो जाएगा. 90 input पे the output was 1. Now for gx, which is a new function, and how am I relating gx to fx? वो fx में सर आपने 3 ऐड किया हुआ, जो पहले sin का फंक्शन था उसमें आपने 3 ऐड कर दिया. So all y values में 3 ऐड 3 ऐड 3 3 3 3 3 3 प्लस हो जाएगा. So what will be the graphical transformation then? ये ग्राफ आपको सोचो, visualize it. How will the graph be transformed? अगर सब में 3 3 3 3 3 3 3 ऐड हो जाए, what will you see on the graph? जो 0 था वो कहाँ चला गया? 3. जो 1 था ये कहाँ चला गया? जो 0 था ये कहाँ चला गया? ये वाला 0 3.
जो -1 था, yes, 2. This is not a stretch. First, you need to understand it, visualize the graphical variation before I show you the actual graphs. Now, to understand the operation, I'm not just multiplying it by 3, I'm adding 3 to it. So, your -1 will go to 2. So, what kind of a shape should I get? Very good. ये पूरा ग्राफ इस तरह से बनता है. Very good. What kind of a translation? Vertical translation. By how many units? 3. If this would have been 4 units. If this would have been -2, 2 unit, नीचे चली गई. Translation we have already studied in O levels can be represented by a matrix. So either call it vertical translation or shift, or we can just call it translation by the matrix 0C. Translation, when we represent it through a matrix, the first row, first column represents the movement in X. The second row represents movement in Y. Remember O levels? I'm repeating constantly that I'm just taking sine as an example. This is a function transformation. It can be of any function. You just need to understand the operation that is happening to it. Obviously tan x, x square. मैं कह रहा हूँ ऐसा function भी हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा. I'll show it to you. We will do questions and then you'll understand. So yes, understand the example, but overall related to the conclusion. If कोई भी function on this is hard to transform. That is why I'm showing you both examples of the functions that you have already studied, which are quadratic and, for example, if I have the same function, if I write fx -3, क्या होगा? पूरा function 3 unit नीचे आ जाएगा. It's not stretch. Understand this thing. Sir, सबकी y values में you will decrease 3. So you see what happens to the function. Red is the original one, blue is the transformed one. Is this clear? Quadratic असल में symmetrical होता है, तो बहुत सारी चीजें quadratic में इतनी आसानी से आपको नजर नहीं आती. Clear? Okay, moving on. So we have understood 2 vertical transformations. Now, what if I would have multiplied all the values? अगर मैं -fx, then what? Tell me what will happen to the graph. पहले मेरे 18 input पे 0.309 आ रहा था. तो now on the 18 input, what will I get? -0.309. और जो negative आ रहा था वो positive हो जाएगा. All the outputs are being multiplied by a negative sign. So we call this a vertical flip or reflection in the x-axis. Vertical flip or reflection in the. So in short, जब भी मैं output को negative से multiply करूंगा, that will be a vertical flip or reflection in the x-axis. Yes. Is this clear or not? So this is the third vertical transformation, which is reflection in the x-axis. हम असल में होता क्या? What basically happens when we generalize it in our mind, we help ourselves by relating the operations to transformation. Whatever operation we are doing to the output, we are seeing vertical transformation for that. For example, if I'm multiplying the output by a number, I am seeing vertical stretch by that factor. I am adding some value to the output, so I am seeing vertical translation. So when I'm multiplying negative with the output, I want something vertical in my mind, so I will call it vertical flip. But we do not write that in the answers. हम सोच लेते हैं कि vertically कोई चीज flip हो गई. Is that clear or not? If you flip something vertically, so that means it is a reflection in the x-axis. Is this clear? If you keep your 2 hands right in front of you, बराबर बराबर में,
So your hands are horizontal flips of each other, horizontal reflections of each other. Is this clear? So these are the three vertical transformations. Now horizontal one is just a bit tricky in the beginning, but once you understand it, trust me, it will be very easy for you. I'll again go to the example of sine to help you understand that. Okay, understand this thing. बहुत आराम से बात को समझना and try to understand it. How did the computer plot this? It took many values of the angle की different values ली. उसने 1 लिया होगा, 2 लिया होगा, 3 लिया होगा, and what did he do? उसने input किया sine में. I tell you to make this exact entire graph draw करो. तो आप इतनी सारी so many values of x you'll have to take. You'll use your calculator to get your values of y, right? And then you will join dot to dot plot बना के graph पूरा join करेंगे. And that is what the computer is also doing, right? It is using different values of x, so different values of x input कर रहा है, और उन values पे उसको जो y के output मिल रहे हैं, that is what it is plotting. Is that right? कौन से ऑपरेशन से गुजर रहा है वो साइन ऑपरेशन से गुजर रहा है, साइन फंक्शन से गुजर रहा है. वो भी मेरा इनपुट है, उस पर साइन फंक्शन लगाता है, मुझे आउटपुट दे देता है. दैट राइट? व्हाट इफ नाउ यू आर डूइंग f3x? पहले तो बताओ f3x को लिखा कैसे जा सकता है. इफ आई वर टू राइट इट, व्हाट विल इट बिकम? Very good, sine 3x. So the input is being multiplied by 3 now. What was the original function doing? आप input ले रहे थे. That input was going into sine and giving you the output. But now that is not the case. Whatever input you are giving, पहले वो क्या हो रहा है? पहले 3 से multiply हो रहा है. जैसे पाकिस्तान में कोई भी काम कराना हो, पहले आपको जेबें गर्म करनी पड़ती है ना, सोच के साथ. So this is what is happening. Your input पहले ही 3 से multiply हो जा रहा है. And then it is going into the sine function. Is that right or wrong? अब सोच समझ के जवाब देना. पहले आप क्या कर रहे थे, मैं दोबारा बताता हूँ. आपने 0 इनपुट किया, उसने 0 आंसर दे दिया. साइन की एग्जांपल. फिर you started increasing your input. When you were increasing your input, your output was also increasing, right? बढ़ाते 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 you reached 90. When you input 90, what did you get? आप आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल फंक्शन मत भूलो. द एग्जांपल दैट वी आर टेकिंग इज sin x. आपने इनपुट 0 किया, यू गॉट आउटपुट एज 0. आहिस्ता आहिस्ता यू स्टार्टेड इंक्रीजिंग योर इनपुट. आपने बढ़ाते रहे, योर आउटपुट वाज इंक्रीजिंग. यू कैन सी दैट ऑन द ग्राफ. बढ़ाते 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 यू रीच 90. आपने 90 इनपुट किया. व्हाट डिड यू गेट? 1. आप अपने इनपुट बढ़ाते रहे. आपने कहा कि 90, 91, 92, 93, 94, 95. नाउ योर आउटपुट इज डिक्रीजिंग. कम होते होते when you input 180, what did you get? 0. फिर आपने इनपुट बढ़ाते रहे 181, 182, and your outputs are still decreasing. होते 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 270 पे you got -1. सब हम इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री में समझ कर आए कैसे आया. 270 से बढ़ाते बढ़ाते you reach 360 and you got 1. आगे भी जा सकते हैं, we know functions, graphs, but अभी फोकस हमारा 0 से 360, that is our domain right now. Now understand what happens when you have f of 3x or sin 3x. आप अपना इनपुट वही लेकर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. जब आपने 0 इनपुट किया तो व्हाट इज योर आउटपुट? जब आपने सिर्फ 30 इनपुट किया. सोच समझ. कैलकुलेटर यूज नहीं करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड इट विजुअली, बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू देयर विल बी फंक्शन दैट यू हैव नेवर स्टडीड ऑन, और उसके सवाल क्या है. आपने तो 30 इनपुट किया. ही इज टेलिंग मी 1 आया. कैसे आया? हाउ डिड यू गेट 1? Very good. Whatever input you are doing, वो 3 से multiply हो गया. And then it went into sine. And then it gave me the answer as 1. तो मैं पहले 90 पे 1 पे पहुंच रहा था. अब मैं मेरा क्या input था? What is the input that I did? 30. Remember I told you inputs are like piano keys. You press them and you get the sound. ये आपके input हैं, आप values डाल रहे हैं भाई. So I just input 30 and I got the output as 1. बढ़ाते 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 I reached 60. 0. Why? Because my 60 was multiplied by 3. It became 180 और साइन के 180 इनपुट जा रहा है. इसी तरह if I give 90 input, it is 1, and 360 की जगह if I just put in 120 input,
So how should the graph look to me then? I have not drawn the graph right now. Very good. Good observation. First, you need to visualize the variation mentally. मैं बना दूंगा graph तो सारा purpose बेकार हो जाए. So now you observe कि 120 के अंदर ये पूरा एक cycle, it has completed one of its cycle. Is that right? So what do you see that when it completes a cycle in 120 degree, you call, sir, ये तो shrink हो गया horizontal. Is that right? But I told you we do not use that word to represent transformation. Now we'll use only those three words: deflection, translation, and stretch. So what do you call this now? Horizontal stretch by a factor. 3 तो नहीं है, if it would have been 3 तो 3 times खिंच जाता. Horizontal stretch. Very good. Horizontal stretch by a factor 1/3. Makes sense? Understood? I told you because quadratic is symmetrical, उसमें ये चीजें observe करना मुश्किल हो जाती हैं, but I'll try to show you. It is a horizontal stretch by a factor 1/3. And what is your invariant line? What is your invariant line? Your invariant line is the y-axis. जो चीज y-axis से जितनी दूर थी, जो y-axis पे थी वो तो वहीं रहेगी. For example, this point, ये कितना दूर है y-axis से? -2.9 -0.292. y तो y अपनी जगह पर ही. रेड वाली को तुमने जो इनपुट किया था तो y कम हुआ है, x कम हुआ है. यूं आ रहे हो तो यूं. हाँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ यू आर गेटिंग क्लोजर टू द y एक्सिस, आपका x कम हो रहा है. सो योर y एक्सिस इज द इनवेरिएंट लाइन. दैट मींस जो y एक्सिस पे वो उतना ही दूर रहता है. इट डज नॉट चेंज. इनवेरिएंट लाइन, द लाइन दैट डज नॉट वेरी. बाकी पॉइंट्स जितने दूर थे पहले, अब उससे 1/3 दूर हो जाएंगे. आई विल जस्ट मेक इट इजी फॉर यू. What is this transformation? Horizontal stretch by a factor 2. Very good. Horizontal stretch by a factor 2. So ये point अभी y-axis से कितना दूर है? -0.297 दूर है. इसी के बराबर वाला पॉइंट ये उससे डबल दूर हो गया या नहीं हो गया? अंडरस्टैंड दिस थिंग. एवरी पॉइंट वो जितनी दूर y-axis से है उसका डबल दूर हो जाएगा. सो y-axis इज द इनवेरिएंट लाइन. उसके हिसाब से सोचना, नॉट द शेप ऑफ द कर्व. बी वेरी क्लियर. जो स्ट्रेचिंग होगी that will be from x-axis as the invariant line if it is a vertical stretch, or y-axis is the invariant line if it is a horizontal stretch. Make sense? So now we'll say that if we have f of ax, we'll say it is a horizontal stretch by a factor of 1/a. Make sense? So हम अपनी आसानी के लिए we'll summarize it कि horizontal में जो ऑपरेशन हो रहा है ना, उसका उल्टा करो, उसका इनवर्स करो. If you are multiplying by 3, the stretch factor is 1/3. If you are multiplying by half, the stretch factor is 2. If you are multiplying by 2/3, the stretch factor is 3/2. Input की बात हो रही है. Be very clear about it. Is this clear? Okay, now moving on to the next one. आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेटर होते जाते हैं. No worries. Okay, now what? Now every input, आपकी input होने से पहले उसमें से 30 minus हो रहा है. First you were inputting 0 and you were getting 0. Now when will you get 0? Very good. When you input 30, that is when you will get the output as 0. बिल्कुल, absolutely right. 210 पे भी होगा. So what will happen to the graph? Visualize it. अभी तो 0 पे 0 आ रहा है. अब you people are telling me अब सर 30 पे 0 आएगा, 0 पे 0 नहीं आएगा. Very good. The whole graph will translate.
हमने -30 किया बट द ग्राफ गोज टू पॉजिटिव। मैं बार बार बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में उल्टा काम होता है हमारे ऑपरेशन से। क्यों? क्योंकि फिर हमें इनपुट्स उल्टे चेंज करने पड़ते हैं। तो अगर जीरो था तो हमने जीरो में से 30 माइनस किया तो नेगेटिव में जाना चाहिए। बिल्कुल वहां पे भी जाएगा, ग्राफ विल गो ओवर देयर, बट राइट नाउ लुक एट द डोमेन दैट वी आर फॉलोइंग। हम सिर्फ इस शेप को देख रहे हैं। अगर डोमेन वहां पीछे होती तो यूर राइट, दिस ग्राफ विल आल्सो गो बैक। उसमें की बात नहीं कर रहे। -30 पे भी वहां जाएगा। अब हम वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। हम ओरिजिनल शेप की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। पूरा शेप कहाँ चला गया? राइट पे चला गया, 30 यूनिट्स टू द राइट। दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, अगेन शोइंग यू। मैंने -2 किया बट पूरा ग्राफ 2 यूनिट आगे आ गया। जो यहाँ था वो पॉइंट यहाँ आ गया एंड देन सो ऑन। -2.5 कर लेता हूँ। एवरी पॉइंट हैज मूव्ड 2.5 टू द राइट। सर आपने तो माइनस किया। अच्छा, व्हाट इफ आई वुड हैव एडेड +2.5? फिर कहाँ जाता ग्राफ? यस, हॉरिजॉन्टल में ऑपरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर, उसके रेसिप्रोकल से स्ट्रेच हो रहा था। इज दैट राइट? व्हेन वी आर एडिंग समथिंग तो पीछे जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, एंड व्हेन वी आर सबट्रैक्टिंग समथिंग तो इट इज गोइंग फॉरवर्ड। इट मेक्स सेंस बिकॉज यू विल हैव टू वेरी योर इनपुट्स टू गेट द सेम रिजल्ट. And remember, all of this is linked to the original function. If we do not link it to the original function, we are not actually understanding it. सही है? So this is, if it is a f of x plus c, it is a horizontal translation shift by -c units, or we'll say it is translation by -c and 0. If यहाँ पर अगर negative होता तो automatically this would have been positive. Clear? Now what if I would have multiplied the input with a negative sign? What would I see? इनपुट ही अगर मैंने नेगेटिव से कर लिया, अभी तो आई हैव नॉट शोन यू द ट्रांसफॉर्म ग्राफ, दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ ऑफ sin x. वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, so what will happen? कैसे मिरर बन जाएगा? हाँ, तो मिरर तो बनेगा कैसे? कौन सी लाइन मिरर बनेगी? y axis will become the mirror line. It will be reflected on the y axis. या इसको अगर, क्योंकि इनपुट को वी ट्राई टू लिंक इट टू हॉरिजॉन्टल्स, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल फ्लिप. We'll not write it, but for ourselves, in order to understand that whatever operation is happening to the input, it is resulting in horizontal transformation. So it is a horizontal flip, but the formal way of writing this transformation is reflection in the y-axis. Is this clear? So understand the operations that are happening to your function, and that will help you decide the transformation. So these are the 6 transformations. Okay. I'll share the file. Have a look at this question now. We have not even given you a graph for this one. The graph of y is equals to fx is transformed to the graph of y is equals to 1 plus f into half x. And this is a 4-mark question. So describe fully 2 single transformations which have been combined to give the resulting transformation. First, write down the operations. Write down the operations. Original fx के साथ किया क्या क्या है हमने mathematically. लिखो पहले, लिखो, write it down. What operations have you done to the original fx? One किस में किया? Input or output. You need to be careful so that you can relate it to the transformation. One added to the output, and input half multiplied by input multiplied by half. So what will be the transformation for that? Horizontal
horizontal stretch by a factor 2 and adding 1 to the output. Output में कर रहे हैं तो जो काम कर रहे होते हैं, the same is the transformation. Don't worry. If you have multiplied your input by half, that means it's a horizontal stretch. You remember, you don't need to write this. This is just the thought process that we are doing because we are learning the topic right now. So if we understand the operations only, then we'll be able to relate it to trans. Remember, I am insisting ये सब original function से link करना जरूरी है. अभी तो उसने आपको function बताया नहीं. So generally जब वो पूछ रहा है तो horizontal input multiplied by half, that means it's a horizontal stretch by a factor 2, right? And 1 added to the output, so it is a vertical translation by 1 unit. पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा. तो हम पहले इनपुट का सोचेंगे या आउटपुट? दोनों, doesn't matter. वो इनपुट वाला is horizontal and output is vertical. दोनों both are irrelevant. तो एक का दूसरे से ताल्लुक नहीं होता. If you are doing transformations vertically, उसका horizontal से ताल्लुक नहीं. Is this clear or not? इनपुट में अगर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. वन अपॉन हाफ इज 2, तो ए हो जाएगा. वन अपॉन ए इज ए. अपॉन नहीं, इट्स नॉट अपॉन. माइनस सी हॉरिजॉन्टल. दैट मींस इफ +3 हो रहा है तो -3 0 की ट्रांसलेशन हो जाएगी. इफ +5 हो रहा है तो -5 0. इफ -3 हो रहा है तो +3 0 हो जाएगी. मेक सेंस? उसके बाद practice more questions and then we will discuss the queries.